People who get stigmatized face barriers in getting the help that they need. We at Devsinc, we care about our people. We want to end this stigma. The sole reason we hired a psychologist at our workplace. Hi, my name is Arusha Aslam. I'm marketing executive here at Devsinc, and today I'll introduce you to Mary Pervaiz, our wellness consultant. Hi, my name is Mary Parvez, and I am a psychologist. I am the wellness consultant at Devsinc, and I'm really thrilled that finally companies in Pakistan are taking this initiative. And I'm so super glad that software companies are making sure that they are providing mental health professionals to their developers, to their leadership, because I think it's a dire need and we need to recognize it immediately. मेरा यहाँ पर होना was probably one of the things that was being planned since a couple of years now, but because I was experiencing and learning from these different industries, I think I was maybe just preparing myself to work for the software industry. I'm super glad that we're talking about mental health today. इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कर हम ये social norm जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, ये taboo concept जो है उसको हम आसान बना सकते हैं लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना. एंड आई एम जस्ट हियर टू मेक श्योर कि जिसके जो सवाल हों, जिसकी जो कन्फ्यूजन्स हो, एम्बिग्विटीज हों, वो हम सब जो है उसको दूर कर सकते हैं. Very glad to have you as a part of our team. So since you have experience in different industries, real estate, education, etc. So what are the issues, how are issues in tech industry different from other industries? I think Arusha, that's a very good question. Why? Because tech जो है वो पाकिस्तान में लास्ट 5 to 10 years के अंदर उसने बूम लिया है. लीडरशिप से लेकर डेवलपर्स तक आई थिंक एवरीबडी इज़ न्यू इन द फील्ड. हाँ, कुछ लोग जो पहले से वेब डेवलपिंग में हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं, सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे थे. दीज वर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, बट दे वर नॉट रियली एज important or considered as important earlier. How is it different? Real estate, manufacturing, service industry in general, they're doing whatever they're doing, but tech is specifically related to people who are providing services outside of the country. आप लोगों का time schedule जो है वो completely different है. किस तरीके से आप लोग client को deal करते हैं, that's completely different. आपके working hours. So when developers come to me और जिस किस्म के issues उनके होते हैं, जैसे focus का issue है, attention span कम हो जाता है, स्लीप इश्यूज आ रहे होते हैं. अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं उनको ये नहीं कह सकती कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि जनरली ये होता है कि हम कहते हैं कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप स्क्रीन ना यूज़ करें. पर एक बच्चा जो 8 to 12 आवर्स जो है काम कर रहा है पर डे, फिर कुछ उसने बेचारे ने सोशल मीडिया भी करना होगा इस्तेमाल. और अगर अब मैं उसको बार कर दूँ या केज करूँ कि नहीं, यू कैन नॉट यूज़ इट. ऑब्वियसली दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू कैन नॉट वर्क विदाउट sitting in front of the screen. So it is very different. I cannot give them the same remedies. I cannot tell them the same lifestyle changes जो कि शायद आप किसी और को बता रहे होंगे. चाहे वो real estate हो, चाहे वो manufacturing industries हैं, चाहे वो कोई और service industry है, they have a very different way of working. आपके जो working hours हैं मिसाल के तौर पे 9 to 5 है या 10 to 6 है, whatever they're working in the daylight. Developers usually are working in the night. They have to become night owls. उसकी वजह से obviously there's a major lifestyle change that happens. फिर जो एक transition होती है from their university life to their work life, and also we prefer that these kids are younger so that they're younger, they can learn better, they can be trained better, and so they can then become much bigger resources or much better resources or potential resources in the coming years. So it's very different from other industries. एक specific age group, fresh graduates में, fresh developers में ये focus का issue and time का issue तो है ही. This tech industry is new for the leaders as well. Right. So how important do you think is the mental health of the leaders to keep the whole clan healthy and productive? So there's obviously a trickle down effect. हम ये नहीं कह सकते कि culture जो है वो bottom to top जाता है. The culture is obviously always coming top to bottom. अगर आपकी leadership is not healthy, अगर आपकी leadership आपकी mental health के ऊपर, अपनी mental health पे actually focus नहीं कर पा रही है, they will not be able to put up good examples in front of the developers.
these are the leaders जो रोल मॉडल भी हैं, जो एग्जाम्पल्स भी हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल काम किया इंडस्ट्री के अंदर, और वो बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि दिस इज़ वॉट यू विल इवेंचुअली बिकम. एंड सो आई थिंक दैट मेंटल हेल्थ फॉर दैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इमेजिन दैट यू आर मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. हमारे केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अबाउट 1350 people right now, if I'm not wrong. Yep. Right? So 1350 people, and a leader has to have, I can't really say perfect, क्योंकि perfect mental health जो है it's inevitable कि आप काम कर रहे हैं, stress है ज़िंदगी में, आपको manage करना ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो completely perfect हो जाए. तो I think this is also a myth कि शायद mental health जो है वो perfect हो सकती है किसी की, और आपका lifestyle जो है वो बिल्कुल without किसी mistake हो सकता है. There will be days when even the leader would not feel themselves. Even they would have a good day and a bad day, and they will have a day which is productive, and there will be a day which will not be productive. So I think कि वो थोड़ा सा उनको leverage जो है वो ज़रूर देना चाहिए हमें, कि वो भी इंसान है, लीडर तो है बेचारा, लेकिन इंसान भी है वो. और अगर आपने इतने लोगों के साथ डील करना है, there is obviously एक इमोशनली काफ़ी ओवरवेलमिंग चीज़ भी है. आपने इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपने उनको ट्रेन भी करना है, आप उनके प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हैं, आप उनको ये होप भी दे रहे हैं कि if you continue to work, yes you are overworked, yes there is burden, but there is a better future. They call it a light at the end of the tunnel. That's what they call it, and I think it's a pretty good example because हाँ काफ़ी मुश्किल काम है, आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपके हार्ड वर्किंग आवर्स हैं, आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है, but there's a light at the end of the tunnel, and I think that's worth it. Since you're saying कि सब कुछ perfect नहीं हो सकता, even leaders face issues, so can you tell 2 to 3 tips that people can adopt so that will bring a positive mindset in their life, in their daily life? Again, I think कि मैंने इस 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोगों ने मैंने कोई 12 दफ़ा लाइफस्टाइल की बात कर दी है, और the first I think the tip or the strategy to go about managing this whole thing is to have a lifestyle which is disciplined and it is routine. I do understand कि आपका नाइट की शिफ्ट है, आपके वर्किंग आवर्स के बारे में शायद आप इतना श्योर नहीं है, क्लाइंट कॉल कभी भी आ जाती है. I've understood and I've learned these things when I came to Devsinc. Of course उससे पहले शायद I had just this concept कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, but I was able to see very closely कि असल में वाकई में ground realities क्या हैं. It's very hard. Lifestyle changes करना भी मुश्किल है. अगर मैं उनको एक specific diet plan देना चाहती हूँ, या अगर आप एक specific कहें कि gym routine आपने follow करनी है, they would have to adjust it into their specific routine. लेकिन एक disciplined routine होना, psychologists, therapists, behavioral scientists all over the world, they would tell you how having a disciplined routine changes a lot of those things. A small example again, maybe it's sad and it's a little hard for me to give this example, lekin this is the reality of the developer, so maybe I have to tell. People who work in front of the screens or use the screens between the hours of 11 p.m. to 4 a.m., these are the people who are more likely to have any mental disorders or illnesses. अब that means कि हमारे सारे developers जो हैं वो 11 to 3-4 p.m. के AM के दरमियान में काम कर रहे होते हैं. So they have to be extra careful. उनको अपनी डाइट का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, उनको अपनी डिसिप्लिन का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है. So this is one. The other important thing is that हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना बहुत छोटी छोटे चेंजेस हैं, ट्वीक्स हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, और हमें लगता है कि ये क्या ही चेंज लेकर आ जाएंगे. So for example, I recommend all my developers to learn how to meditate. I tell them and I try and teach them while they're with me in one-on-one sessions and even in group sessions कि meditation कितनी ज़्यादा important है. I specifically recommend them sleep meditation. Why? Because most of our developers, I think not just here in Devsinc but otherwise with my private clients as well, they will have problems with sleep. They would not be able to sleep properly, and rightly so, because you're in front of the screen all the time, your hormones are playing up with you, your neurochemicals are not as balanced, and as I said, they need extra care. So these are the two, I think, ready to go immediate changes जो वो लोग कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत आपको कोई effort करने की ज़रूरत नहीं है. Devsinc has a wellness consultant. I don't know about other developers now, but therapy is also something which is extremely important. Why?
you're able to just sometimes word it out. और जब आप express कर रहे होते हैं, जब आप बता रहे होते हैं, तो आपका आधा मसला जो है वो वहीं पर ही हल हो जाता है. A lot of times हमें लगता है कि शायद surface के ऊपर लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा मसला है, लेकिन जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो आधी जो रिलीफ है वो वहाँ मिल जाती है, और उसके बाद जब एक वो छोटा सा जो ट्वीक की स्ट्रैटेजी मिल जाती है, बाकी का रिलीफ वहाँ पर होता है. तो द बिगर प्रॉब्लम व्हेन वी सी कि ये तो शायद हल नहीं हो सकता, दिस इज मेकिंग माई लाइफ डिसफंक्शनल, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इट तो समटाइम्स द चेंजेस आर जस्ट वेरी स्मॉल. सो थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंज जिसके अंदर आपका रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लास्टली meditation is something that I highly recommend. So guys, write it down, have a disciplined lifestyle, meditate and express. Thank you so much for your tips, and thank you for being in Devsinc and help us end this stigma. Thank you so very much. Thank you guys for watching. Like and share it with your friends.